સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા ભેસ્તાન આવાસની પાણીની ટાંકી પાસે એક યુવક પર જીવલેણ હુમલો થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે। મળતી માહિતી મુજબ સાહિલ ખાન નામના ઈસમ પર અજાણ્યા હુમલાખોરોએ તીક્ષ્ણ હથિયારોથી હુમલો કર્યો હતો। લોહીલુહાણ અને ગંભીર હાલતમાં ઈજાગ્રસ્ત સાહિલને તાત્કાલિક અસરથી સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે। ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને પોલીસે હુમલા પાછળનું સાચું કારણ જાણવા અને ફરાર થઈ ગયેલા અજાણ્યા હુમલાખોરને ઝડપી પાડવા માટે આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે। मेरे लड़के को पहले फोन आते हैं धमकी भरे, और धमकी भरे फोन से मेरा लड़का पहले ही डिप्रेशन में है। ऑलरेडी उसका मगज का मैं पहले ही इलाज कर चुका हूँ और अभी भी इलाज चालू ही है, क्योंकि 15 दिन पहले मैं सिविल से उसका लेके आया हूँ डिस्चार्ज। उसके बाद में हर्षल हॉस्पिटल की मेरे पास में फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्योंकि उसके डिप्रेशन की वजह से वो अपने आप में नहीं है। प्लस में उसको धमकी भरे फोन आते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही लड़के को देखा हूँ तो मतलब क्या हुआ भाई, तो कुछ बोलता नहीं। ये लड़का मेरे घर में ही है। फिर घर में से और वापस आज उसको फोन आते हैं। फोन आने के बाद में उसको बोलते हैं कि तू फटाफट पानी की टांकी के पास आ जा, कुछ बात करना है। कुछ बात करने के बहाने से बुलाए और डायरेक्ट उसके ऊपर हमला हो गया।